Good afternoon, students. Today we start the next topic of chapter 4, Alternative Centers of Power, and the name of topic is Association of Southeast Asian Nations. Earlier we discussed about European Union, which came into existence in 1992, and its role in the hegemonic world of United States of America. Now we start our next topic about ASEAN. The countries of southeastern region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialism, both European and Japanese, before and during the Second World War. ASEAN is the group of 10 member countries of Southeast Asia, and this region was suffered a lot due to the colonialism by the European and Japanese power before and during the Second World War. दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र को काफ़ी बार उपनिवेश बनना पड़ा यूरोपियन शक्तियों का या जापान जैसी ताकत का. When the war ended, this region confronted problems related to nation building, poverty, economic backwardness, and pressure to join one bloc during the Cold War era. So after the end of Second World War, there were several problems faced by this region, and the problem was like the nation building, poverty, economic backwardness, and there was a great pressure to join either of the one bloc, USA or USSR, because we know that after the end of Second World War, the Cold War was started between USA and USSR. Efforts at ASEAN and the Third World Unity, such as Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, were ineffective in establishing the Convention for Informal Cooperation and Interaction. As we know that Asian and Third World Unity, because India did not join either USA or USSR, and there was third option which was given by the 5 members of the world, that was non-aligned movement. But non-alignment movement did not include this region into his movement. दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो भारत देश ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन न करते हुए अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, और उस गुट निरपेक्ष आंदोलन में इस क्षेत्र को शामिल नहीं किया, उतना कोऑपरेशन नहीं किया गया जितना इसको ज़रूरत थी. ASEAN was established by the 5 states Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand and Philippines in 1967 by the signing of Bangkok Declaration. It is very important question that what is Bangkok Declaration? By the Bangkok Declaration, ASEAN came into existence by the 5 member states Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand and Philippines. So जो फाउंडर मेंबर्स थे वो 5 थे, और एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आसियान के अंदर वो कितने हैं? 10 हैं. The objective of ASEAN included, so now what are the objectives of ASEAN? Included acceleration of economic growth, आर्थिक वृद्धि करना, and through that the promotion of social progress and cultural development. इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके द्वारा सोशल प्रोग्रेस, इट मीन समाज की उन्नति, और कल्चरल डेवलपमेंट सांस्कृतिक जो विकास है, ये इनका मुख्य उद्देश्य था आसियान का. इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना था. A secondary objective of ASEAN was to promote regional peace and stability based on the rule of law and the principles of United Nations Charter. And the second objective was to promote regional peace, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व बनाए रखना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, and to follow the norms of United Nations Charter. Later, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia also joined ASEAN and taking its strength to 10. बाद में ये 5 मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर बने, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई. ASEAN is based on a form of interaction which is non-confrontationist, informal and cooperative. Respect for national sovereignty is central to working of ASEAN. Yeah, it is fact. ASEAN एक शैली है, it is a way of interaction
that without any clash, to solve the border dispute, to maintain peace and security, to maintain law and order, and to respect for national sovereignty. These are the principles of Association of Southeast Asian Nations. ASEAN countries have celebrated what has become known as the ASEAN way. और इसी शैली को किस नाम से जाना जाता है? आसियान शैली के नाम से जाना जाता है. कि आसियान शैली क्या है? इट इज़ द वे ऑफ इंटरेक्शन टू सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स among the members of ASEAN countries. Since ASEAN had some of the most rapidly growing economies, it expanded its objective beyond the realm of social and economic cooperation. आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट अगर इकोनॉमी है वो किसकी है? आसियान की है. भले ही इसकी इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और EU से छोटी है, यूरोपियन यूनियन से छोटी है, बट इसकी जो ग्रोथ है वो डे बाय डे काफ़ी तेज़ी से क्या हो रही है? बढ़ रही है. In 2003, ASEAN followed the European Union path by establishing an ASEAN community with 3 pillars. यूरोपियन यूनियन की तरह अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए आसियान ने 3 पिलर बनाए. और नेम द 3 पिलर्स: आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. नाम से स्पष्ट होता है, दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी, दिस इज़ फॉर इकोनॉमिक, इट मीन्स इकोनॉमी, एंड दिस इज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल. The ASEAN Security Community was based on the dictum that outstanding territorial dispute should not result in an armed conflict. What is the objective? What is the purpose behind the formation of ASEAN Security Community? To solve the territorial dispute without any fighting. Yes, without any war. We have to solve all the problems by sitting together, by interacting together. By 2003, several agreements were signed by ASEAN member states to respect peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereignty. The coordination of security and foreign policy is done by a forum established in 1994 called the ASEAN Regional Forum. So these are the major objectives of ASEAN Security Community, and for this they follow some principles like they respect the territorial boundaries, they maintain peace, neutrality, cooperation, and for this purpose, for run a foreign policy, common foreign policy, they established the ASEAN Regional Forum in 1994. ASEAN is principally as an economic association. सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो आसियान जो है वो एक क्या है? आर्थिक समुदाय है, आर्थिक संगठन है. आसियान रीजन इज़ क्वाइट स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू US, EU एंड जापान. अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो काफ़ी पीछे है. अगर हम साइज़ की बात करें तो आसियान की जो इकोनॉमी है एज़ कम्पेयर टू EU, यूरोपियन यूनियन और USA से काफ़ी छोटी है. हाउएवर इट्स इकोनॉमीज आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन these areas. Its influence has grown beyond the region. परंतु इसकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, रेट जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ गति से क्या कर रहा है? बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. The ASEAN Economic Community aims to create a common market. Now what are the objectives, what are the aims of ASEAN Economic Community? To create a common market. एक ऐसा बाजार बनाना जिसमें सभी लेन देन कर सके, एक कॉमन करेंसी हो, एंड प्रोडक्शन बेस्ड विद इन आसियान कंट्रीज. और जितना भी जो प्रोडक्शन हो इस मार्केट के लिए वो सारा इन्हीं मेंबर कंट्रीज के अंदर होना चाहिए. इट इवन टारगेट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन. The economic community also aims to reform the existing ASEAN dispute settlements mechanism to settle economic disputes. जितने भी आर्थिक जो झगड़े हैं उनको बैठकर क्या किया जाए? सुलझाया जाए. ये भी एक प्रिंसिपल है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का. आसियान हैज़ क्रिएटेड ए फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज and labor. USA and China are quite near in negotiating FTAs with ASEAN. At present time, United States of America and China, which are the large economies of the world, they are also trying to make FTAs agreement with the members of ASEAN.
आसियान इज ग्रोइंग रैपिडली एज अ सिग्निफिकेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत तेज गति से आसियान एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बढ़ रहा है। इट्स विजन 2020 एम्स फॉर अ वाइड रोल फॉर आसियान इन द ग्लोबल कम्युनिटी। और जो इसका विजन है 2020, ये ग्लोबल कम्युनिटी में इसके रोल को और ज़्यादा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि इनके जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो काफ़ी जो ब्रॉड बेस्ड हो रहे हैं, वो काफ़ी वर्ल्ड के इकोनॉमी, वर्ल्ड के जो पॉलिटी है, वर्ल्ड की जो सोशल डेवलपमेंट है, उसको इफेक्ट करने वाली है। This is based on the current ASEAN policy to boost negotiation over conflicts in the region. ASEAN mediated in several conflicts like that of Cambodia, East Timor, etc. बहुत से ऐसे जो disputes हैं जिनको आसियान मेंबर्स ने बैठ के सुलझाए, चाहे वो कंबोडिया का हो, ईस्ट तिमोर का जो झगड़ा था उसको बैठ के इन्होंने आपस में क्या किया है, ठीक किया है। इट मीट्स एनुअली, ये एनुअली मिलते हैं टू डेलिब्रेट ईस्ट एशियन कोऑपरेशन, ताकि पूर्वी एशिया के देशों का जो सहयोग है उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। The present economic potential of ASEAN, especially its trade and investment prospectus, makes it an attractive proposition for growing economies like India and China to foster economic cooperation. Now, the member of South Asia, like the India and the China, they are also trying to make FTAs agreement with ASEAN. India had not paid adequate attention to ASEAN during the Cold War years, but in recent years it has moved closer to ASEAN. शीत युद्ध के दौरान भारत इतना ज़्यादा करीब नहीं था आसियान के जितना अब वो कोशिश कर रहा है। It has signed FTAs with 3 ASEAN states, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और भारत देश ने 3 जो आसियान सदस्य देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, उनमें मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। The ASEAN India FTA came into effect in 2010 और ये जो FTA था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2010 से क्या हुआ है, इफेक्टिव हुआ है। So by these 3 points, by these 3 pillars, we can see here that what is the role which is played by ASEAN Association of Southeast Asian Nations. At present time, so many countries are trying to make their FTAs agreement with ASEAN. There are some basic information regarding ASEAN, which is a regional, which is a economic association of Southeast Asian nations. Total members are 10, but motto here, what is the motto of ASEAN? One vision, one identity and one community. Anthem, the ASEAN way. Secretariat and Jakarta in Indonesia. Working language, English. Official languages are 10. Member states are also 10. Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. And Secretary General at present Lim Jock Hoi, and the Bangkok Declaration, and by this Bangkok Declaration the ASEAN came into in existence, that was signed on 8th of August 1967. So my dear students, today we discussed the world's fastest economy of the world, the Association of Southeast Asian Nations. Thank you and have a nice day.